Okay. Welcome everyone. You are watching Let's Crack JEE. I am Aryan Choudhary and this is the first session on S block. Okay. So I hope I am properly audible as well as visible. Let me set everything once. एक बार थोड़ा सा टाइम देता हूँ. Okay. Okay. So those of you who are watching my video for the first time, I am Aryan Choudhary. I am a graduate of IIT Dhanbad. I cleared JEE in the year 2016. Okay. So this session is about S block. This is the first inorganic topic that we are starting. ठीक है, तो अभी अपना प्लान ऐसा है ना कि देखो, since a lot of students were asking me about कि सर inorganic कब स्टार्ट करोगे, तो अब अपन क्या करेंगे on this channel, अपन alternate days एक दिन ऑर्गेनिक करेंगे and on the next day we'll be doing inorganic. So I have also started a new topic, that is your alcohols, phenols and ether. So कल मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था ऑफ दिस टॉपिक. ठीक है, टुडे विल बी स्टार्टिंग एस ब्लॉक. ओके, सिमिलरली अभी कल अपन अल्कोहल्स का सेकेंड लेसन लेंगे. ठीक है, सो ऑल्टरनेट डेज विल बी टेकिंग alcohols, phenols, ether and your S block. Okay, simultaneously what we are doing is in my special classes we are solving questions of different topics. So today there was a session on chemical bonding. So we solved around 26 question in this session, है ना. and इसके पहले अपन ने periodic properties किया था. Since I was going to start S block, the knowledge of these two chapters are very useful in the chapter of S block, क्योंकि ये दोनों चैप्टर ना, these are the foundation chapter that you need to understand before you start doing your S block, P block, है ना. So just go through these special classes where we have solved around, I have taken 2 sessions on periodic properties जिसमें अपन ने around 45 questions solve किए, and on chemical bonding we have solved around 26 questions. ठीक है, tomorrow at 2:30 PM in my special class we'll be solving questions on alkyl halide. Okay, and soon, that is from the next week, okay, from Monday, what we are going to do is we'll be solving questions from JEE 2020. So what I have planned is we'll be starting with organic chemistry. अपन organic chemistry के questions करेंगे, तो all the questions that have been asked in your JEE 2020. So there were around 18 papers, है ना, in JEE 2020. So I will pick all the questions that are from this JEE 2020 and we'll be having 3 sessions. I will divide all the portion into 3 sessions so that we will take proper time to understand all the problems that have been asked in these 18 papers. Okay, so let's start our today's session, that is on S block, है ना. And before we will start, let me tell you about the plus subscription. Okay, so there are 2 subscriptions that we are offering right now. One is your plus subscription and another one is iconic subscription. So I will tell you about the things what you get from these. These are the basic things that are common in your plus subscription as well as in the iconic subscription. So you will have your daily life classes, है ना. यहाँ पे क्या होगा कि आप directly you can interact with your teachers, you can ask doubts to them. This will be like a classroom class. ठीक है, जहाँ पे से आप offline class करते थे, this will be like that. Okay, next thing is your structured courses. So it's very important to organize everything in a proper way, right? So here what we are doing is we are providing you with the organized structure. So you just need to get enrolled in the plus, and after that you can watch our videos to you can watch as many videos as you want on the plus platform to understand each and every concept. Okay, next thing is your live test and quizzes. Okay, this is very important. Now when you take a 2-year subscription, you'll be giving around 100 plus tests. So when you will go to give your JEE examination, so you'll be very confident because you have got into a habit of giving examination, right? And apart from that, आपके weekly basis पे, monthly basis पे you will have examination जिसके basis पे आप evaluate कर सकते हो whether you have properly studied that topic or not, है ना.
जब अपन एग्जाम देते हैं तो अपने को समझ में आता है यार कि वेदर वी आर प्रॉपरली एबल टू यूज द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड और नॉट, है ना। एंड इफ यू फील लाइक कि ओके मेरा ये वाला पार्ट वीक है एंड आई एम नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ ए पर्टिकुलर टॉपिक, देन यू नीड टू रिवाइज दैट थिंग। सो आई फॉलो वन रूल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि देखो एक बार स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ो, once you are done with the theory, start solving as many questions. So once you will solve questions, you will understand whether you are properly able to use that concept or not. Chali. So we have talked about the things that you get. Next one is how to take the subscription. So the first step is download the Unacademy learning app from the Play Store. Once this is done, you will see a lot of different options on the screen. Okay, so you can take either the plus subscription or the iconic one. So let's first talk about the plus subscription. So in the plus subscription, you can either take a 1 year subscription or a 2 year subscription. Okay, sorry for that. So the prices are 38,500 and 56,000, but it can drop to 34,650 and 50,400 if you use my code, which is AC01. This code is providing you with a 10% discount. Okay, just wait for a minute. Okay, so this code is providing you with a 10% discount. Okay, cool. चलिए, so I hope these things are clear. We have already talked कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. Next thing is your iconic subscription. So the thing about the iconic subscription is there are a lot of students who need daily guidance, right? They need someone who can help them in every step, who will motivate them. So for all of those students, we have launched a new subscription, that is the iconic subscription. The prices are a bit higher because the thing is you will be getting a personal coach here. Okay, so you will be this personal coach will be helping you to plan everything and he'll be teaching you those topics, right? So these teachers will be always present for you. It will be like a personal coach जहाँ पे आपके पास ना you will be having a one-to-one session with them, so you can discuss all of those things with them, right? Okay, so prices are 50,400 and 77,400 after using this code, which is AC01, which is providing you with this 10% discount. Chalo, we have discussed all of that. Now the question that arises here is how to study inorganic chemistry. I have seen a lot of students asking this question कि यार कि सर कैसे inorganic chemistry पढ़ना होता है. So the first thing is inorganic chemistry ऐसा है, देखो अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ा है तो यू मस्ट हैव सीन कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर रिएक्शन मैकेनिज्म. वंस यू विल अंडरस्टैंड द रिएक्शन मैकेनिज्म, देन यू कैन ईजिली use that knowledge to solve your question, right? So in organic chemistry, the first step is to understand the reaction mechanisms, okay, of all the reaction that we are doing. But because the reason is, देखो आपका organic है ना, that is totally logical, okay. But in the case of inorganic chemistry, there are a lot of chapters जहाँ पे ना you just need to remember a lot of things, okay. So the best way to study inorganic chemistry is by solving as many questions as you can, okay. जनरली ना आप देखोगे ना कि ऑल द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन योर जेई मेंस, अगर मैं सिर्फ जेई मेंस की बात करूँ तो एवरी क्वेश्चन यू कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एवरी क्वेश्चन in the book of NCERT. So the first step towards reading inorganic chemistry is go through the NCERT once, underline the important things. अंडरलाइन कर लो आराम से, एक बार रीड करो, 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो, ठीक है, अंडरलाइन कर लो ताकि आप वापस रिवाइज करो तो आपको सिर्फ वो पॉइंट्स एक बार देख के ऐसा क्लिक होता जाए, ओके दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट. वंस यू आर डन विद NCERT, ठीक है, यू मस्ट हैव बीन स्टडीइंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर टीचर, राइट? आप किसी ना किसी के लेक्चर्स देख रहे होगे, आप कहीं ना कहीं से आप कहीं कोचिंग में पढ़ रहे होगे, या फिर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ रहे होगे, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे होगे. तो एक जगह से आराम से सारी चीज़ें कवर कर लो, NCERT खुद से रीड कर लो. वंस यू हैव डन ऑल ऑफ दीज, उसके बाद क्या करो, solve all the questions that have been asked in previous year JEE mains, okay. So there are 2 things that I recommend. One is there is a book VK Jaiswal,
is the author, you will बालाजी पब्लिकेशन की ये बुक है. ओके, जस्ट बाय दिस बुक और यू कैन फाइंड द पीडीएफ ऑफ दिस बुक ऑनलाइन. ठीक है, आप वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. So these two things are very important. You can also do solve Cengage, right? So it's very important. दोनों में से कोई भी एक बुक पिक कर लो and start solving questions from. Okay, I hope I am properly live. एक मिनट रुक जाओ सब लोग. चलिए. ओके, सो दीज थिंग्स वर वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप ये सारी चीज़ें सबको क्लियर है. ओके, सो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो बुक है, जब मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, आई वॉज प्रिपेयरिंग इन द ईयर 2014 to 16. Okay, so I did this book. This book has a lot of different type of questions. So you can find there is a level 1 in the starting. So start solving level 1 just after reading NCERT or once you have covered everything. जब आप revise कर रहे हो तब आप level 2 कर सकते हो. ठीक है, and there is also a section for level 3. So level 1 में you will find a lot of questions on the major topics. तो आपके वहाँ से ना ये easy questions होते हैं, but they will revise the concept that you have studied. ठीक है, चलिए. एंड वंस यू आर डन विद दिस, आप एडवांस के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, बिकॉज द थिंग इज सिलेबस इज सेम. सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि सेम कॉन्सेप्ट पे आपके जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आ जाए. सो इन टुडेज सेशन व्हाट वी विल डू इज, अपन स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग. आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ द एनसीईआरटी पोर्शन. ठीक है, अपन ने पूरा एनसीईआरटी कवर किया है यहाँ पे. बस एक मिनट रुक जाओ, मेरे को बस एक बार प्रॉपरली चेक करना है दैट वी आर प्रॉपरली लाइव. इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट मी नो इन द live chat that you can. Okay, चलो let's start the topic of S block. ठीक है, so since I have told you NCERT is one of the major portion that you need to cover for your inorganic chemistry. So I have covered everything that is written in the NCERT. ठीक है, अपन देखते देखते चलेंगे NCERT में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है. तो फर्स्ट थिंग इज, देखो ये जो दो ग्रुप्स है ना, दीज आर नोन एज योर एस ब्लॉक. दीज आर प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड इन द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन रिमेंबर दीज एलिमेंट. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखो आपको ना एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो याद होने ही होने चाहिए. सो देयर इज अ ट्रिक यू कैन रिमेंबर एज हे ली ना की रब से फरियाद. सो यू कैन राइट एज हे ली ना की. So this is the trick that I used when I was preparing for JEE. So हेली ना की रब से की फरियाद. Okay. Next one, this one is a bit funny. So it is बेटा मांगे कन्या सुंदर बापू राजी. Okay. So this was the trick that my chemistry teacher taught me. So I am telling you the same trick. There are a lot of different tricks that you can find online. So you can remember these things in whatever way you can do it. So it's very important to remember all of these elements. ठीक है, वैसे तो एस ब्लॉक के एलिमेंट तो बहुत ईजी हैं यार, तो ये तो वैसे भी याद हो जाएंगे, बट इफ यू नीड द ट्रिक दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप पूरा पीरियोडिक टेबल भी ऐसे ट्रिक से कर सकते हो. सो वेन एवर यू विल सी अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, तो आप ना जब एग्जाम में जा रहे हो तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा पीरियोडिक टेबल का आपको आइडिया रहेगा. इफ यू ड्रॉ द पीरियोडिक टेबल वंस, आप यू कैन ईजिली सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है, बहुत बार आपने देखा रहेगा ना द चैप्टर ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द रो, है ना. तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना सीख लो. ठीक है, एज वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आई विल बी ऑलवेज टेलिंग यू डिफरेंट ट्रिक्स दैट आई नो to remember these different things, different
प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अपन वो चीज़ें डिस्कस करते चलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आराम से देखो, आराम से थोड़ा एस ब्लॉक पी ब्लॉक पे ना एकदम आराम आराम से पढ़ना होता है, आराम आराम से टाइम लेके चीज़ें पढ़ना है अपने को। चलिए, सो विल सी फ्यू पॉइंट्स, ठीक है। सो योर एस ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप्स वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, वन इज योर अल्कली मेटल एंड अनदर वन इज योर अल्कालाइन अर्थ मेटल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज they are present on extreme left, we have just discussed this. The last electron is filled in the valence s orbital, ठीक है। सो जो आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना इन योर एस ब्लॉक, दैट इज इन अल्कली मेटल एंड इन योर अल्कालाइन अर्थ मेटल, वो आपके एस ऑर्बिटल में, राइट। तो यहाँ पे द लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी s1, राइट, जो भी यहाँ पे नंबर है। इफ आई विल टॉक अबाउट हाइड्रोजन, जनरली वी डोंट कंसिडर हाइड्रोजन एज अल्कली मेटल, ठीक है। आपके अल्कली मेटल्स आर फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंशियम। सो योर लिथियम का अगर वी विल सी द configuration, it is 1s2 2s1. So the last electron is present in the s subshell, while for beryllium it is 1s2 2s2. So आप जैसे से नीचे जाओगे ना, आप सोडियम का देखोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा दैट विल बी प्रेजेंट इन 3s1. पोटेशियम का विल बी 4s1, ओके। सिमिलरली मैग्नीशियम का इट विल बी 3s2, कैल्शियम के लिए 4s2. तो एज यू मूव डाउन द ग्रुप आप देखोगे द लास्ट इन बोथ ऑफ दीज अल्कली मेटल्स एज वेल एज अल्कालाइन अर्थ मेटल, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन योर s orbital. I hope this for everyone, okay. The first group contain lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, okay. Generally we do not study about francium because your francium is a radioactive element and your radioactive elements are not in the syllabus of JEE, okay. Having general electronic configuration of inert gas, that is NS1, okay, inert gas and NS1. So you can write all of these elements, okay, as inert gas and NS1. They are called as alkali metals. So all of these elements are known as alkali metals. We have discussed this, है ना। अपने को पता है कि देखो सोडियम के पहले जो एलिमेंट आता है दैट इज फ्लोरीन, सो यू कैन राइट फ्लोरीन एंड नाउ सिंस दिस इज द थर्ड रो, राइट, this is the third period, okay. So you can write as sodium as fluorine and 3s1, right. You can write potassium as chlorine and 4s1. So इसका मतलब ये होता है कि all the electronic configuration till fluorine is the same in sodium. It's just that the last electron is present in the s subshell, and since it is present in the third period, so that is why it is 3s1. So this session is for all the people जिनका JEE 2021 में है and जिनका JEE 2022 में. So we'll be discussing everything in a very slow manner, जहाँ पे अपन सारी चीज़ें समझेंगे, okay. चलो, so these points are present in your NCERT, so these are very very important, ठीक है. Next thing is, देखो अपन इनको अल्कली मेटल बोलते हैं, राइट. द फर्स्ट जो आपका जो ग्रुप है उसको अपन अल्कली मेटल बोलते हैं. सो व्हाट इज द रीजन why do we call them alkali metal? The reason is they are called as alkali metal because they form hydroxide on reaction with water. So if you put any, let's say we have sodium, right. Sodium is one of the alkali metal, right. So if you put sodium into water, so what you will get is you will be getting NaOH, okay. This is what you will get from in the solution, okay. So which are strongly alkaline, since देखो you are creating this hydroxide, we are creating this hydroxide, this is basic, okay. Basic का मतलब क्या है, this can easily convert into Na positive plus OH negative, right. So this OH negative is the base here, right. I hope this part is clear, है ना. Now let's talk about the second group, which is your alkaline earth metal. So all the elements beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium are your alkaline earth metal. इनका जो electronic configuration होता है that is inert gas and NS2. So if we will be talking about, let's talk about magnesium. So magnesium can be written as fluorine and
सिंस इट इज प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड 3s2. ठीक है, आपका कैल्शियम कैन बी रिटन एज क्लोरीन एंड 4s2. I hope all of these things are clear to everyone. Chalo, one thing that is very important, the first element of alkali and alkaline earth metal differs in many respects with the other member of the group. Okay, जनरली क्या होता है ना, यू मस्ट हैव स्टडीड इन द चैप्टर ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कि आप जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो ना, जनरली जो एलिमेंट सेम ग्रुप में होते हैं उनके प्रॉपर्टीज थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं, राइट? थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं. द वे दे रिएक्ट, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, द वे दे रिएक्ट विद अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, वो चीज़ें बहुत सिमिलर होती हैं, है ना. बट द थिंग इज, द थिंग अबाउट अल्कली एंड योर अल्कलाइन अर्थ मेटल इज कि उनके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं दैट इज योर लिथियम एंड हियर इट इज बेरिलियम. So both of these elements have a totally different properties compared to the rest of the element which are present in the same group. Let's talk about the reasons. What is the reason behind this? ठीक है. So the first thing is, देखो, since the size of lithium and beryllium is very small, this is one of the reasons. आप जैसे जैसे ना, as we move down the group, size increase होता है, right? We have studied this. Size increases because of extra shell या extra shell का addition होता है, right? Next one is, there are two things that determine the size of a element, है ना. So at one thing is the number of cells, second one is your Z effective, right? So these things you must have studied this in the chapter of periodic properties, and Z effective is written as Z, which is your atomic number, minus sigma, which denote shielding. Okay, so I hope you must have studied these things. So the size of the first element of alkali metal as well as alkaline earth metal वो बहुत छोटा होता है. नेक्स्ट वन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो आपका जो लिथियम है ना एंड बेरिलियम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कंपेरेटिवली वेरी ह्यूज देन द रेस्ट ऑफ द elements which are present in the same group. Next one is your high ionization energy. So ionization energy is the energy that you need to take out the last most loosely bounded electron, right? Okay, मैंने extra draw कर दिया. Now the thing is, since आपका जो लिथियम है and beryllium, both of them are small, तो यहाँ से लिथियम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, है ना. बिकॉज दिस यहाँ पे जो न्यूक्लियस इज पुलिंग दैट इलेक्ट्रॉन एंड द इंटरन्यूक्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हियर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, बट आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे ना, तो व्हाट विल हैपन इज, सिंस नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, आपका जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है दैट इज प्रेजेंट वेरी फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो वहाँ पे यू कैन ईजिली टेक आउट द इलेक्ट्रॉन. सो दैट इज वाई, देखो, these are the properties on which your first element of alkali and alkaline earth metal differ from the rest of the element in the same group. So first one was your small size, second one is high electronegativity, third one is high ionization energy, next one is your high hydration energy. So the thing is, आपका जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है, हाइड्रेशन एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड, ओके, व्हेन यू पुट एनी एलिमेंट इन वाटर. सो क्या होता है कि आपका जो ये है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लिथियम एंड बेरिलियम, व्हेन यू पुट अ पॉजिटिव चार्ज इन द सोल्यूशन, व्हाट विल हैपन, अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को वाटर में डाल रहे हो तो क्या होगा कि ऑक्सीजन विल सराउंड दीज पॉजिटिव चार्ज, राइट. सो वाटर इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. अपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि दे स्टेबलाइज द चार्जेस विच आर प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, है ना. सो इफ यू हैव अ स्मॉल चार्ज, उसको सराउंड करना इज ईजी कंपेयर टू इफ यू हैव अ चार्ज विच इज वेरी ह्यूज. इसको सराउंड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल चाहिए रहेंगे, देयर विल बी स्पेसेस इन बिटवीन, राइट. बट अगर आपके पास छोटा सा मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको सराउंड करना इज ईजी, है ना. सो सिंस इसको सराउंड करना इज ईजी, तो यहाँ पे ना द एनर्जी विच इज रिलीजिंग is very is huge compared to the rest of the element. So यहाँ पे in the case of lithium and beryllium,
इनका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज इनके साइज बहुत छोटे हैं. ओके, एंड लास्ट वन इज योर अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल. सो जनरली दिस पॉइंट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. विल बी टॉकिंग अबाउट दीज पॉइंट्स इन द चैप्टर ऑफ P block. Okay, so because of all of these properties, the first element of alkali and your alkaline earth metal have react very differently than the other elements which are in the same group. ठीक है, चलो. Next thing is your diagonal relationship. You must have studied the diagonal relationship in the chapter of periodic properties, right? चलो, लेट्स स्टडी अबाउट द डायगोनल प्रॉपर्टीज. अभी अपने जस्ट डिस्कस किया कि जो लिथियम है एंड जो बेरिलियम है, दीज हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अनीता झा, या हाय अनीता. ओके, सो अभी अपन ने डिस्कस किया कि आपका जो लिथियम है एंड बेरिलियम है, दे डू नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टीज एज द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप. तो यहाँ पे क्या होता है ना कि लिथियम हैज, या अनीता, राइट नाउ देर आर ओनली फ्यू पीपल्स हु आर वॉचिंग, बट देर आर पीपल जो बाद में देखते हैं. सो इट डिपेंड्स, जिनको यूजफुल लग रहा है दे आर वॉचिंग. इफ यू थिंक इट इज हेल्पिंग यू तो आप देखो यार, इट्स वेरी सिंपल. ओके, नाउ द थिंग इज, जो आपका जो लिथियम है ना, दे शेयर अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज विच इज सिमिलर टू मैग्नीशियम. अपन ने नॉर्मली इन द चैप्टर ऑफ पीरियोडिक टेबल्स वी हैव स्टडीड कि सेम ग्रुप के एलिमेंट का सेम प्रॉपर्टी होता है. बट सिंस लिथियम इज हैविंग अ वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, इट शेयर द सेम प्रॉपर्टीज एज योर मैग्नीशियम. ठीक है, बेरिलियम शेयर अ सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक योर एल्यूमिनियम. ठीक है, एंड वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस. वी विल टॉक अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑफ पी ब्लॉक. जनरली क्या होता है ना यार, आपके सारे ग्रुप्स में ना जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, दे बिहेव वेरी डिफरेंटली देन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ें नोट कर लो दैट लिथियम शो सिमिलर प्रॉपर्टीज देन सिमिलर टू मैग्नीशियम. ठीक है, एंड बेरिलियम का प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के साथ सिमिलर होता है. ओके, सो दिस टाइप ऑफ डायगोनल सिमिलैरिटी बिटवीन द प्रॉपर्टी इज नोन एज द डायगोनल रिलेशनशिप. तो देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, वी विल नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हियर. बस इतना ही है कि इनके बेसिक प्रॉपर्टीज आर सिमिलर. ठीक है, इनके साइजेस, आयनिक साइजेस आर सेम. ठीक है, द वे दे रिएक्ट while becoming forming the charge, right? So these things are similar in the case of lithium, magnesium, as well as in the case of beryllium and aluminum. चलो, so these 2 points, ये जो points है ना, these points are directly from NCERT. ठीक है, तो you can note down these points. ये directly कभी भी आपको जेई में पूछ सकते हैं. That is your monovalent sodium and potassium ion and divalent, मतलब आपका सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, magnesium 2 plus and your calcium 2 plus are found in large portion in biological fluids. So these ions are present inside our body. ठीक है, these are very useful ions which are used for different purposes in our body. ठीक है, तो आपके बहुत सारे biological fluids में ना you can find out these ions. So these ions are important for these are necessary for our body. ठीक है, next one is, these ions perform important biological functions such as maintenance of ion balance. So these two are, so इनके ना, these are the functioning, that one is your ion, these maintain the ion balance and nerve impulse conduction. Okay, so ये चीज़ें आप बस नोट डाउन कर सकते हो. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस टॉपिक पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं जेई में. ठीक है, these are more important for the people who are preparing for NEET. Okay, but yeah, in the JEE में भी questions आ सकते हैं that which are the ions which are used in the biological functioning. So these 4 are the ions which can be used, which are important, which are present in your biological fluids. चलो, we will talk about the electronic configuration of these elements. Okay, so all the alkali metals have one valence electron. अपने को पता है कि देखो, सारे जो elements होते हैं ना, उनको
ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, ठीक है. दे वांट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर ऑर्बिटल. नाउ द थिंग इज, अभी अपन ने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि जो आपके जो अल्कली मेटल होते हैं ना, उनका कॉन्फ़िगरेशन इज इनर्ट गैस प्लस ns1 electron, right? Now the thing is, your alkali metals only have to lose one electron to attain noble gas configuration, है ना. सो द थिंग इज कि आपका जो अल्कली मेटल्स है ना, दे विल इजीली लूज वन इलेक्ट्रॉन टू lose one electron because they are getting the noble gas configuration. Now one more thing, since we have discussed कि lithium का साइज छोटा है, right? So lithium से एक इलेक्ट्रॉन निकालना is comparatively difficult, but as you move down the group, if you move down the group, let's say we have potassium, rubidium and cesium. We'll only talk till cesium. तो यहाँ पे क्या है, देखो cesium का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, it is very huge. To take out one electron from the outermost shell of cesium, that is IE of cesium, is less, right? While lithium से electron निकालना is difficult. Okay, so what we understood कि आप down the group जाओगे तो आपका IE decrease होगा, ठीक है. So आपके जो नीचे वाले जो elements है ना, they are more electropositive. Okay. इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये है कि दे कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू द cesium कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू cesium पॉजिटिव. ओके, सो दैट इज व्हाट हैज बीन रिटन इन द एनसीईआरटी कि s इलेक्ट्रॉन या द लूजली हेल्ड s इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल ऑफ दीज एलिमेंट्स मेक दैम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है. दिस s इलेक्ट्रॉन इज वेरी लूजली बाउंड, राइट. इसको अपन बहुत इजिली रिमूव कर सकते हैं, राइट. So once you will remove this electron from all of these elements, you will get the noble gas configuration, and it is very easy to remove that electron as you go down the group. Okay, so we have seen the electronic configuration. So इनमें से आपको बस एक ही electron remove करना है to get the noble gas configuration. Okay, so you should know this like for lithium, sodium and potassium का तो आपको पता होना चाहिए atomic number. It is 3, 11 and 19. Okay, chalo. Now this part is important. Okay, we have talked about the electronic configuration. Now let's understand the thing about the flame test. Now the thing is, if you have a oxidizing flame, okay, let's say you have oxidizing flame. If you put any of the alkali metals in the oxidizing flame, ठीक है, तो क्या होगा कि this oxidizing flame is providing a lot of energy to these elements. तो आपका जो last electron है ना, which is loosely bound, it can go to a higher state, right? Let's say it is going on the next shell, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ चला गया. And once you have closed the oxidizing flame, थोड़ी देर के बाद क्या हो सकता है कि जब वो कूल डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो इनिशियली अपन क्या कर रहे थे, अपन फ्लेम से ऐसे इसको गर्म कर रहे थे. वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, राइट. वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी. दैट एनर्जी वाज यूज्ड टू एक्साइट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन शेल टू द नेक्स्ट शेल, ठीक है. बट व्हेन वी हैव स्टॉप्ड हियर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो अपने हायर शेल में, दिस इज नॉट दैट स्टेबल. इट विल ट्राई टू गो बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट, है ना. तो जब आप थोड़ा टाइम दोगे ना, तो दिस विल कम बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट. And when it is coming back to the ground state, what is happening is यहाँ पे आपका energy release होगा. Okay, so the energy जो यहाँ पे release होगा ना, तो उसका एक wavelength होगा, right? So the thing is, in the case of alkali metal, the wavelength that we are getting here is falling in the range of visible light, ठीक है. सो देखो ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है कि दैट इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप, और है ना, यहाँ से देखो डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ, फिर बहुत डिक्रीज हुआ, ठीक है. सो दीज आर द कलर्स दैट वी आर गेटिंग डिपेंडिंग अपॉन दीज वेवलेंथ, ठीक है. सो इन द केस ऑफ लिथियम द कलर इज क्रिम्सन रेड, इन द केस ऑफ सोडियम इट इज येलो,
पोटेशियम के लिए वायलेट, रुबिडियम के लिए रेड वायलेट एंड सीजियम के लिए ब्लू. So you need to remember the colors here. Okay. I hope this part is clear. So you need to remember the color that is produced when all of these elements are passed through flame test. Okay. So these points are the same thing that we have talked right now. That is because the heat from the flame excites the outermost orbital electron to a higher energy level. When the excited electron come back to the ground state, there is an emission of radiation, and this radiation is the visible region of the spectrum. अपन ने यही सारी चीज़ें अभी डिस्कस किया, तो यू कैन राइट डाउन दीज पॉइंट्स इन अ नोटबुक. ठीक है. सो यू विल सी कि एग्जामिनेशन में ना you will find out कि ये सारे क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं. सो व्हाट इज द कलर दैट यू गेट इफ यू एक्साइट पोटेशियम. ठीक है. चलो, we will move forward. We'll discuss few properties of alkali metal. This is the table that I have taken from NCERT. Chalo. First thing is you need to remember the atomic number of lithium, sodium and potassium. 3, 11 and 19. These are very important. ये तो आप find out कर सकते हो. देखो, there is a trick to find out these numbers, right? देखो, 2, 8, 8, 18, 18, 32. So these are the number of elements which are present in each period. So there are 2 elements in the first period, 8 in the second. ठीक है. So since all of the alkali metals are the first element in each period, तो देखो, अगर अपन को सोडियम का फाइंड आउट करना है तो it will be the first element of the third period, right? So 8 to 10 and 1, so 11. If you want to find about potassium, so just add these 3, right? So it is 18, right? This is 18 and first element of this series, so 19. So this is how you can find out the atomic number. ठीक है, बहुत easy. Next one is your atomic mass. It is 7, 23 and 39. ठीक है. So lithium, sodium, potassium का आपको बहुत ज़्यादा यूज आएगा, तो you should remember these values. बाकी आपका रुबिडियम एंड सीजियम का अगर कभी भी यूज आया तो इन द एग्जामिनेशन दे विल बी प्रोवाइडिंग यू. वी हैव डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये अपन ने डिस्कस कर लिया. वी हैव टॉक्ड अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी. सो योर आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग, है ना, एज यू गो डाउन द ग्रुप. आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो इट इज डिक्रीजिंग. ओके, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे, एकदम सिंपल. अभी अपन ने जस्ट डिस्कस किया था ये. नेक्स्ट वन इज योर हाइड्रेशन एंथैल्पी. ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट कि व्हाट इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी. हाइड्रेशन एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड, राइट? सो दैट इज व्हाई यू कैन सी दिस नेगेटिव चार्ज. ओके, सो if we just forget about the negative charge, let's talk about the magnitude. अपन ने डिस्कस किया था कि सिंस लिथियम इज वेरी स्मॉल, लिथियम पॉजिटिव विल बी अगेन वेरी स्मॉल, सो इट इज़ वेरी इजी टू हाइड्रेट लिथियम पॉजिटिव. तो यहाँ पे ना जो एनर्जी रिलीज हो रहा है दैट इज ह्यूज कंपेयर टू, वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल एनर्जी दैट इज रिलीजिंग इन दिस रिएक्शन. ठीक है. सो यहाँ पे in the case of lithium it is maximum, and as you go down the group it is decreasing. Okay, so the amount of energy is decreasing as you go down the group. Next one is your metallic radius. So your metallic radius will increase as you go down the group because number of shells are increasing, right? So आप जैसे से नीचे जा रहे हो आपका रेडियस बड़ा होता जा रहा है. Similarly this is your ionic radius भी increase होगा. There is no exception here again. Okay, it's just that कि आपका ionic radius will be smaller than your metallic radius. Obviously we are removing one of the electron, so size will be small, है ना. चलो, let's talk about the melting point. Okay, now the thing about melting point and the boiling point is your melting point as well as your boiling point decreases as you go down the group. Okay, and the reason here is, देखो,
इनिशियली ना सीजियम का साइज छोटा है, राइट। तो यहाँ पे जो फोर्सेस है ना, द फोर्सेस विच आर होल्डिंग सॉरी, लिथियम का साइज छोटा है, सो द फोर्सेस विच आर होल्डिंग लिथियम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सीजन का साइज बहुत बड़ा है यार, तो फोर्सेस थोड़े वीक हैं, है ना। तो दैट इज वाई दे आर, उनको थोड़ा मेल्ट करना, बॉयल करना इज ईजी। लिथियम का साइज छोटा है, फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सिंस फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग इट्स डिफिकल्ट टू मेल्ट और बॉयल देम, है ना। So, आप सीजियम को ना, आप सीजियम पोटेशियम इनको ना आप नाइफ से कट कर सकते हो, वाइल कैन नॉट कट लिथियम विद द नाइफ। तो सीजियम एंड पोटेशियम आर, सीजियम, रुबीडियम, पोटेशियम, these are very, the forces here are very very weak. Okay, now the thing about density, your density here increases, okay, then decreases, and then again it increases. This is the trend in density. So यहाँ पे आपके पास लिथियम था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। ओके, सो लिथियम से सोडियम में जाने में जनरली आपकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। इट्स जस्ट दैट बिटवीन सोडियम एंड पोटेशियम यू हैव एन एक्सेप्शन, ठीक है। सो दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वन थिंग दैट यू नीड टू, दैट यू कैन नोटिस हियर इज कि आपका जो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम है ना, इनका डेंसिटी ना, इनकी डेंसिटी इज लेस देन 1। फॉर लिथियम, sodium and potassium, density is less than 1, right? So the thing is कि आपके lithium, sodium and potassium, these will float on water, है ना, ये float करेंगे, while your rubidium and cesium, both of them will sink in water because इनकी density is higher than your water. Okay, next one is your standard potential. I hope this part is clear to everyone. So what I will do is I will clear few things here. Okay, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं। Okay, let's talk about the standard potential. Okay, so standard potential for lithium is maximum, ठीक है। सोडियम का लीस्ट है, ठीक है। लिथियम का मैक्सिमम है। ओके, एज वी हैव डिस्कस, देखो बाकी यहाँ पे ना ऐसा हो रहा है कि द ऑर्डर इज लिथियम, फिर आपका रुबीडियम, फिर यू हैव सीजियम, फिर पोटेशियम एंड सोडियम का लीस्ट। द थिंग इज, अभी अपन ने डिस्कस किया था कि लिथियम का आई इज मोर, राइट। सो व्हाट वी हैव सीन अभी थोड़ी देर पहले कि लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना इज डिफिकल्ट। ओके, सो स्टिल इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज हायर देन ऑल ऑफ द अदर एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट reducing agent. Okay, by this statement we can deduce that lithium is the strongest reducing agent. बट नॉर्मली क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट आर द एजेंट तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, है ना। सो इस प्रोसेस में लिथियम कन्वर्ट हो रहा होगा लिथियम पॉजिटिव में। सो दिस स्टेटमेंट इज सेइंग दैट दिस रिएक्शन, दैट योर स्टैंडर्ड, दिस थिंग इज फास्टर देन सीजियम। ओके, नाउ द थिंग इज, आपका जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है ना, योर स्टैंडर्ड पोटेंशियल, दैट इज स्टैंडर्ड योर रिड्यूसिंग एजेंट, your reducing nature, I will take reducing nature is depend upon your SRP value, that is your standard reduction potential, ठीक है। now the thing is, आपका जो standard reduction potential है ना, that does not only depend upon IE value. okay, so since all the reactions are happening in water, so you need to consider, देखो first thing is you need to convert your lithium gas, okay, into lithium you need to convert lithium solid into lithium liquid, right, in the solution. so यहाँ पे ना आपका sublimation energy, इसके लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। नेक्स्ट वन इज यू नीड टू कन्वर्ट lithium into lithium positive, which is your IE,
ये एनर्जी भी आप सप्लाई कर रहे हो. नाउ द थिंग इज द ओनली एनर्जी दैट इज रिलीजिंग इज फ्रॉम योर हाइड्रेशन एनर्जी. ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज रिमूविंग. तो जो फाइनली जो आपका एस आर पी है ना, योर एस आर पी इज डिपेंडिंग अपॉन योर सब्लिमेशन एनर्जी प्लस योर ionization energy minus hydration energy. So hydration energy is the only energy that we are getting from this reaction. All the other energy is, all of these energy is supplied by us, right? So since अभी अपन ने डिस्कस किया था कि लिथियम का हाइड्रेशन इज मैक्सिमम. ओके, so that is why the standard potential of lithium is maximum. Okay, Ashish, hi. ठीक है, and we will not talk. Yeah, this is your occurrence in lithosphere. So this part is not that important. चलो, so what I have done here is I have written few points. ठीक है, these are the important points that we have discussed right now. Important points regarding your alkali metals. Okay, generally your alkali metal are silvery white. ठीक है, वो soft होते हैं, you can easily cut them. जैसे जैसे अभी अपने डेंसिटी भी चेक किया था, राइट? या सीन द डेंसिटी एंड दे आर वेरी लाइट. ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज दीज एलिमेंट्स हैव लो डेंसिटी, है ना? इफ यू टॉक अबाउट द साइज ऑफ द अल्कली मेटल, तो अगर अपन एक पीरियड में बात करें ना, तो आपके जो अल्कली मेटल होते हैं उनका साइज सबसे ज़्यादा बड़ा होता है. एज यू मूव अक्रॉस द पीरियड साइज आपका डिक्रीज होता है. The reason again here is your Z effective. ठीक है, so since because of the large size these elements have low density, we have discussed, which increases down the group. Density आपका increase हो रहा होता है as you move down the group. The only exception here is potassium and sodium. That is potassium अभी अपन ने देखा था, राइट? पोटेशियम का जो डेंसिटी है that is lesser than your sodium. So this part is important. The melting and boiling point of alkali metal are low, indicating weak metallic bonding due to the presence of only single valence electron. ठीक है, अपन ने ये सारी चीजें डिस्कस कर लिया. The hydration enthalpy of alkali metal ion decreases. ठीक है, अपन ने अभी डिस्कस किया कि अगर आपके पास छोटा साइज का आयन है तो the hydration will be more, right? So as you go down the group, hydration energy will decrease. Now the thing is, this point is important. That is, lithium positive has maximum degree of hydration, and for this reason, देखो अभी अपन ने डिस्कस किया था कि लिथियम का हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा है, राइट? सिंस लिथियम का हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा है, तो लिथियम यू कैन फाइंड लिथियम इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट. सो लिथियम के हाइड्रेट्स आर वेरी स्टेबल. लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली प्रेजेंट विद द हाइड्रेट, वाइल द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट यू विल नॉट फाइंड द सोडियम का कोई सॉल्ट में हाइड्रेट है. ओके, सो वी हैव डिस्कस कि जो अपना जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, उसकी प्रॉपर्टीज वैसे भी डिफरेंट होती है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट. चलो, नाउ वी हैव कवर्ड a lot of the physical properties. Now we will start talking about the chemical properties of all of these elements. ठीक है, देखो अभी अपन ने डिस्कस किया था कि अल्कली मेटल्स के लास्ट ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. सो इनकी टेंडेंसी होती है कि ये वो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज कर देते हैं, राइट? दैट इज व्हाई योर अल्कली मेटल आर हाईली रिएक्टिव. ठीक है, दैट इज इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है. दे कैन इजीली लूज दैट इलेक्ट्रॉन सो दैट दे कैन अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, है ना? एंड अपन ने डिस्कस किया था कि नीचे जाते एज वी गो डाउन द ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, सो दैट इज व्हाई योर रिएक्टिविटी विल इंक्रीज एज यू गो डाउन द ग्रुप. ओके, इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी एज यू गो डाउन द ग्रुप. सो द फर्स्ट रिएक्शन दैट वी विल सी इज वी विल सी द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल with air. Okay, now the thing is, the way these alkali metal react with air is different. Not all the alkali metal react similar with the air. Okay, the first thing is, आपका जो लिथियम है ना, वो एयर के साथ रिएक्ट करके सिंपल ऑक्साइड बनाता है. ओके, ठीक है,
The alkali metal tarnish in dry air due to the formation of their oxide. So there are different type of oxide. You must have studied normal oxide. Okay, we will see. You can create peroxide. And you can create superoxide. So different element of alkali metals form different type of oxides. So your lithium का size देखो, lithium का size बहुत छोटा है, so it easily form oxide to form Li2O. Okay. ठीक है, lithium forms monoxide. ठीक है, sodium forms peroxide, while the other metal forms superoxide. ठीक है, that is your potassium, rubidium and cesium. ये ना ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. विल सी दैट ऑन टू द नेक्स्ट पेज. ओके, तो यहाँ पे देखो, अभी अपन ने देखा कि लिथियम सिंपली मोनोऑक्साइड फॉर्म कर रहा था, वाइल योर सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म पेरोक्साइड. ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इट इज फॉर्मिंग पेरोक्साइड. सो पेरोक्साइड इज समथिंग विच इज like this. So it is basically an open book structure. ऐसा होता है यार. Okay, and your superoxides, that is our potassium, rubidium and cesium react with oxygen to form superoxide. It's not that कि ये oxide नहीं बनाते, but yeah, mostly they will form superoxide. The thing is कि as you go down the group, size increase हो रहा है, right? Since size is increasing, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का साइज इज कंपेरेटिवली वेरी ह्यूज, राइट? सो यहाँ पे क्या हुआ, दे कैन स्टेबलाइज O2 नेगेटिव. यहाँ पे द कंपाउंड दैट यू हैव इज दैट इज O2 नेगेटिव. ओके, दिस इज व्हाट यू हैव. ओके, सो दिस इज द एनायन हियर. दिस एनायन इज वेरी ह्यूज. सो अपने को पता है टू स्टेबलाइज अ बिगर एनायन यू नीड अ बिगर केटायन. While your lithium positive and sodium positive, these are very small cations, so these are not able to stabilize your bigger anion, that is your superoxide. That is why these are the only alkali metals which okay, एक मिनट रुक जाओ. Okay, so these potassium, rubidium and cesium are the only one who form superoxide. This point is important. In all of these oxides, the oxidation state of alkali metal is +1. So whether it is a normal monoxide, peroxide or the superoxide, in all of these structures, the oxidation state of alkali metal is +1, है ना? Alkali metal सिर्फ +1 oxidation state ही दिखा सकते हैं. It's you cannot have +2 or +3 for alkali metal. So always remember that. ठीक है. नाउ द थिंग इज योर आपके जो लिथियम है ना, अपन ने डिस्कस भी किया है कि लिथियम की प्रॉपर्टीज आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर एलिमेंट्स. नाउ दिस लिथियम देखो सुपर ऑक्साइड तो फॉर्म कर नहीं रहा है. सो एज यू गो डाउन द ग्रुप, आपके सुपर ऑक्साइड की फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड इज ईजी. नाउ वन थिंग, देर इज वन मोर थिंग कि अपने पास एयर में अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन यू ऑल्सो हैव नाइट्रोजन, राइट? सो योर लिथियम ऑल्सो रिएक्ट विद दिस नाइट्रोजन टू फॉर्म Li3n. So lithium is the only element which form lithium nitride. So alkali nitride का अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में ऐसा हो ना कि there is a alkali nitride, ठीक है, there are क्वेश्चन जहाँ पे आपको ना डायरेक्टली चीज़ें नहीं बोलते हैं, ठीक है. तो if there is a question जहाँ पे मेंशन है alkali nitride, तो you need to understand the alkali is lithium. Okay, so this is important. So lithium show exceptional behavior in reacting directly with nitrogen in air to form nitride. Okay, rest of the alkali metal does not form nitride. So because of their high reactivity toward air and water, alkali metals are normally kept in kerosene oil. हाँ ठीक है, तो this is important कि आपके जो alkali metal होते हैं ना, उनको अपन kerosene oil में रखते हैं. They does not react with kerosene oil, while they will react with water and air. ठीक है, अभी अपन ने देखा कि what was the reaction with air, and we have already talked कि water के साथ they form hydroxide. अभी अपन वो भी देखेंगे.
So this is a question from your NCERT. Try to solve this. Okay, so what is the oxidation state of potassium in KO2? This is your superoxide, right? अभी अपन ने डिस्कस किया था कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल इज +1. इट डज नॉट मैटर व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड यू हैव. सो आपके अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होता है. चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, विल बी टॉकिंग अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल टुवर्ड वाटर. सो द अल्कली मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड. सिंपल अपन ने डिस्कस किया था, दैट इज वाई दे आर नोन एज अल्कली मेटल, है ना. So this is the reaction. Finally, we are creating OH negative, which is making the solution basic. Okay. So it may be noted that although lithium has most negative E minus value, अपन ने देखा था, we have seen here कि E negative value of lithium is maximum, है ना. Its reaction with water is less vigorous. Okay, ये जो reaction है ना, this is less vigorous for lithium while it is explosive for cesium. ठीक है, less vigorous than sodium which has the least negative E minus value among the alkali metal. ठीक है, अपन ने अभी देखा था, we have seen the order was your lithium was maximum, then your I guess it was rubidium, then cesium, then it was potassium and last was your sodium, right? I guess this was the order. एक बार चेक कर लेता. Okay, yeah, this is the order. Okay, this is the order of your SRP, standard reduction potential. Okay, so still देखो, लिथियम का मैक्सिमम था, इसका मैक्सिमम था, इसका मिनिमम था. ओके, सो जो नॉर्मली आपके जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका तो यही होता है ना कि दे नीड टू कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव आयन, दे नीड टू ऑक्सीडाइज, राइट. सो इवन दो लिथियम का मैक्सिमम था, स्टिल the reaction of lithium with water is not that vigorous जितना सोडियम का है. Okay, we will talk about the reason. देखो, the reason is already written. All of these points are written in the NCERT. So that is why देखो अपन यहाँ पे क्लास में तो डिस्कस करेंगे. I also want you guys to read the NCERT properly. आराम से रीड करना. देखो, it is written. This behavior of lithium is attributed to its small size. ठीक है, first thing is small size and very high hydration energy. So it's not only कि ये सिर्फ SRP पर डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द साइज एज वेल एज द हाइड्रेशन एनर्जी. अदर मेटल ऑफ द ग्रुप रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विथ वाटर. ठीक है, बाकी जो आपके पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है ना, दे रिएक्ट वेरी एक्सप्लोसिवली विथ वाटर. दे ऑल्सो रिएक्ट विथ प्रोटॉन डोनर सच एज अल्कोहल, गैसेस, अमोनियम एंड एल्काइन. ओके, तो अपार्ट फ्रॉम वाटर इनके साथ भी रिएक्शंस होते हैं. ओके, चलो अभी अपन क्या करेंगे, विल डिस्कस द रीजन बिहाइंड इट. सो लिथियम का वाटर के साथ रिएक्शन इज जेंटल, सोडियम का इट इज विगरस, पोटेशियम में इट इज विगरस विथ इग्निशन, दैट इज आपका ऐसा यू विल सी फायर इन. रुबिडियम एंड सीजियम का रिएक्शन विथ वाटर इज एक्सप्लोसिव. ओके, सो अ पार्ट ऑफ द रीजन फॉर द एक्सप्लोसिव कैरेक्टर ऑफ द रिएक्शन ऑफ रुबिडियम एंड सीजियम विथ वाटर वाज, देखो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इनकी जो डेंसिटी है ना, इनकी डेंसिटी इज लेस देन 1, राइट. इनकी डेंसिटी इज लेस देन, सो ऑल ऑफ दीज एलिमेंट विल फ्लोट ऑन वाटर व्हाइल रुबिडियम एंड सीजियम विल सिंक. तो यहाँ पे क्या होता है कि सिंस लिथियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम ऑल ऑफ दीज आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो उनका जब रिएक्शन होता है ना, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी डिस्प्लेस किधर हो रही है, दीज एनर्जी, ऑल ऑफ दैट एनर्जी इज डिस्प्लेसिंग इन एनवायरमेंट. वाइल विथ रुबिडियम एंड सीजियम व्हाट इज हैपनिंग, पानी के अंदर जैसे दिस इज द वाटर, रुबिडियम इज हियर, तो ये जब रिएक्ट करता है ना, तो जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज यूज्ड टू डिस्प्लेस ऑल द वाटर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे जितने भी वाटर है ना, उसको डिस्प्लेस करने के लिए यूज हो रहा है, राइट. दैट इज वाई द रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव. सो जो पानी जब आपका डिस्प्लेस हो रहा है ना, तो वो बहुत ऐसा एक्सप्लोसिव सा फील आता है. सो वाइल द एनर्जी, ये रिएक्शन विल प्रोवाइड यू मोर एनर्जी, बट यहाँ पे रिएक्शन इज स्लो, आराम से हो रहा है, थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज हो रही है, ऑल द एनर्जी इज रिलीजिंग लाइक इन द एनवायरमेंट. ठीक है,
Okay, so I hope this part of the reaction is clear to everyone, so that this was important. Because they are so much more reactive than the average metal, the alkali metals are sometimes referred as super metals. So ठीक है, simple point है. चलो, moving on to the next thing, let's talk about the reactivity towards dihydrogen. देखो, the alkali metals react with dihydrogen at about this temperature to form hydride. The thing is, देखो आपके जो हाइड्राइड होते हैं ना, they can be either ionic, covalent. ठीक है, you must have studied this the chapter of हाइड्रोजन. ठीक है, सो आपका जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दैट इज कोवेलेंट, राइट, बट द बॉन्ड ऑफ अल्कली मेटल विथ हाइड्रोजन is ionic. Okay, and the thing is, generally, so let's talk about cesium hydride. Cesium hydride is, in cesium hydride, if cesium hydride will dissociate, it dissociates into cesium positive and H negative. So we are generating a hydride ion here. Okay, this is the hydride ion. Okay, so first thing is, all the alkali metals, alkali metal hydride are ionic. Okay, this point is very important. You must have seen, आपने LiAlH4 सुना होगा, right? So this is one reagent that you will use in the chapter of a lot of chapters in the organic chemistry. This is eventually providing you with H negative. ठीक है, there is one more reagent which is your NaBH4. This is again providing you with a H negative. Your alkali metals hydride is a good reducing agent, because the thing is, it is providing a H negative here, right? So this H negative can attack on any species which has a positive charge on it, right? जैसे आपने in the chapter of alkyl halide or in the chapter of aldehyde and ketone, you must have seen कि जैसे आपके पास carbonyl group है ना, let's say you have a carbonyl group, okay, and if we add LiAlH4, so what this LiAlH4 is doing, it is providing us with a H negative. This H negative will attack on this carbon, this bond will open up, है ना? तो यहाँ पे finally we have created a O negative, a H and one more H, right? So if you add water to it, finally it will convert into an alcohol. तो यहाँ पे ये कार्बन का reduction हुआ, right? I hope this part is clear. So your alkali metal hydrides are used as a reducing agent. They are very good reducing agent. Okay, so this part is clear. Simple reactions ऐसे होंगे. If you take any alkali metal, let's say we are taking lithium, 2 lithium plus hydrogen, the thing that will be forming is lithium hydride. Simple reactions. चलो, let's talk about reactivity towards halogen. Okay, so this is the last thing that we'll be doing in today's session. Okay, so reactivity towards halogen, the alkali metal readily react vigorously with halogen. तो आपका ना देखो ऐसा है कि alkali metals को they need to lose one electron to attain the noble gas configuration, and जो आपके जो ये halogens होते हैं उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है to attain noble gas configuration. So alkali metal provides that electron to the halogen. So that is why the reaction between your alkali metal and your halogens are very vigorous. Okay, one thing is your generally आपके जो alkali metals reaction होता है ना halide के साथ, they can be covalent or ionic, right? Lithium के जो halides है ना, they are generally covalent, while the rest of the halide of the rest of the element is ionic. So as we have discussed, देखो you can have lithium fluoride, lithium chloride, lithium bromide, lithium iodide. Similarly for sodium you can have NaF, NaCl, NaBr, NaI. So you can have all of these elements. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे these are ionic,
Okay, while all of the element here is, all of the like these three are covalent. बिकॉज ऑफ द हाई, ठीक है देखो, अपने को पता है कि वी हैव स्टडीड द चैप्टर ऑफ पोलराइजेशन, राइट, वी हैव स्टडीड फायंस रूल. फायंस रूल्स क्या बोलता है कि अगर आपके पास बड़ा एनायन है ना, बड़ा एनायन है एंड यू हैव स्मॉल कैटायन, तो यहाँ पे यू विल हैव मोर पोलराइजेशन, यू विल हैव मोर पोलराइजेशन बिकॉज ऑफ द बिगर एनायन. Okay, and because of the smaller cation, this anion can easily bond with this cation. So यहाँ पे you will have more covalent nature, right? So since your lithium is very small, यहाँ पे lithium का bond with your halogens is covalent, ठीक है. It is because of the high polarization capacity of lithium ion, है ना. The lithium positive ion is very small in size and has high tendency to distort electron cloud around the negative hydride ion. So वही है, positive charge, since the positive charge is very small, इसकी tendency to polarize the anion increases. That is why the covalent nature of the bond becomes covalent. So that is why lithium के halides जो होते हैं ना, वो covalent होते हैं generally. Since anion with large size can be easily distorted, among halides lithium iodide is the most covalent. So as you move down the group, आपका covalent character इंक्रीज होगा. ओके, चलो वी विल टॉक अबाउट द रिड्यूसिंग नेचर. ठीक है, देयर आर फ्यू थिंग्स. दिस विल बी द होमवर्क क्वेश्चन. विल डिस्कस दिस इन टुमारो सेशन, नॉट टुमारो, लाइक डे आफ्टर टुमारो. चलो अभी देखो, अपन ने डिस्कस किया था कि देयर फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट योर elements into gaseous state, that is your sublimation enthalpy. Then you need to take out one electron, right, that is your ionization energy, and finally your hydration energy. So these two energy are the energy that we are supplying, while your hydration energy is the energy that we are obtaining. Okay, so your reducing nature not only depend upon ionization energy, it depend upon all of these three factors. Generally आपके जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना, these are very good reducing agent, lithium being the most and sodium the least powerful. Your standard potential depend upon these three factors. Okay, चलो we'll not go deep into it. I hope सबको थोड़ा basic पता है about the reducing nature. We'll discuss this in our next session of S block. Tomorrow we'll be having the second session of alcohols, phenols and ether. So this is the homework question. So देखो, अपन आगे बहुत सारे reactions करने वाले हैं in the chapter of S block. All of these reactions will be doing in our tomorrow session. ठीक है, like sorry, in the next session of your alkyl halide. Sorry, क्या बोल रहा हूँ मैं? In the next session of your S block. Okay. So with this we'll be ending our today's session. Okay, and I have already told you about the plus subscription as well as your iconic subscription. You can take any of the subscription based on whatever is your need. ठीक है, we have already discussed that. Okay, एक बार मैं आपको वापस दिखा देता हूँ. So these are the prices for your plus subscription. For a 1 year subscription it is 34,650, and for a 2 year subscription it is 50,400. You just need to use my code. This code is providing you with a 10% discount. I am again repeating my code, which is AC01. Okay, and for iconic subscription these are the prices. For a 1 year subscription it is 50,400, and for a 2 year it is 77,400. Okay, so guys, tomorrow at 4 PM we'll be having a session जिसमें अपन क्या करने वाले हैं ना, विल बी टेकिंग द सेकेंड सेशन ऑफ alcohols, phenols and ether. Okay, chalo, apart from that, tomorrow at 2:30 PM we'll be solving questions on the chapter of alkyl halide. This is a special class in which we'll be solving questions on alkyl halide. So all the questions will be from your previous year.
till 2019. Okay, so there is a surprise for you from the next week. What we will be doing is we will be solving questions of JEE 2020 मेंस. ठीक है, तो यहाँ पे आपके 18 क्वेश्चन पेपर थे, राइट. सो आई हैव प्लान कि अपन क्या करेंगे, विल बी स्टार्टिंग विद ऑर्गेनिक. अपन 3 सेशन में, विल इन द 3 सेशंस we will cover all the questions that have been asked in JEE 2020. okay, चलो आराम से जस्ट रीड द NCERT वन फॉर द एस ब्लॉक. आराम से NCERT रीड करो, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कैसे पढ़ना है. हाँ, थोड़ा सा देखो, एस ब्लॉक तो फिर भी थोड़ा इजी है. व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग पी ब्लॉक यू विल सी कि इट्स अ बिट मेसी, बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है. आपका एस ब्लॉक तो फिर भी बहुत ईजी है. ठीक है, सो विल बी टेकिंग अराउंड 3 to 4 सेशंस जहाँ पे अपन आराम से एस ब्लॉक करते हैं, आराम से अपन कंप्लीट करेंगे एस ब्लॉक. आफ्टर दैट विल स्टार्ट पी ब्लॉक. ओके, एंड डोंट फॉरगेट देयर विल बी अ सेशन टुमारो एट 4 PM जिसमें अपन alcohols, ether and phenols करेंगे. So do subscribe to the channel which is Let's Crack JEE. Please like this video and share with your friends if you find this helpful. Use my code AC01 to take any of the Unacademy subscription. I have already told you about how to take that subscription and what you will get from that subscription. Press the bell icon to never miss a video from this channel. Okay, so we are producing a lot of videos on a daily basis. आप सारे videos देख सकते हो. चलिए, bye bye everyone.